Assalamualaikum, welcome back. I hope that you all are doing great by the grace of Allah Almighty. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। आज का हमारा टॉपिक है वेज ऑफ सेइंग नो। इससे पहले भी हम डिफरेंट वेज पढ़ चुके हैं डिफरेंट चीज़ों को कहने के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो नो के ऊपर है, ठीक है, कि हम नो को किस डिफरेंट तरीके से कह सकते हैं। नो तो हम बहुत दफ़ा बोलते हैं और हमने बहुत दफ़ा सुना भी होगा, तो हम डिफरेंट लगने के लिए कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस या फ्रेजेस या वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। चले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू और आई डोंट थिंक आई वाना। ठीक है, वॉन्ट टू की जो शॉर्ट फॉर्म है वो वाना है। I have something else, I have something else, और आप इसको यूँ भी कह सकते हैं I have something else, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। I'm afraid I can't, I'm afraid I can't, और I am afraid I cannot। I'll need to go out, I'll need to go out, or I will need to go out। I'm not interested, I'm not interested, or I am not interested। Maybe another time, maybe another time, not this time, not this time। I'm slammed, or I am slammed। Unfortunately not, unfortunately not। I think not, I think not। No thanks, no thanks। Certainly not, certainly not। No way। अच्छा, यहाँ पे याद रखें कि मैं इनके मीनिंग्स नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये पता है कि हम ये तमाम सेंटेंसेस या फ्रेजेस का इस्तेमाल नो वर्ड की जगह करने वाले हैं, ठीक है। नोप, नोप, ना, ना। I wish I could make it work, I wish I could make it work। My body says yes, but my heart says no, my body says yes, but my heart says no। I'd rather not, thanks, I'd rather not, thanks। Sounds fun, but I'm not available, sounds fun, but I'm not available। I want to, but I'm unable to, I want to, but I'm unable to, or I wanna, but I'm unable to। Not likely, not likely। I'm in season of no, I'm in season of no। That doesn't work for me, that doesn't work for me। I'm not able to commit to that right now, I'm not able to commit to that right now। Not possible। और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।